supply chain. The state is well served by 5 operational airports, a vast rail network, and over 4,000 kilometers of highways, with easy access to major ports via neighboring states. And being a part of the Delhi-Mumbai infrastructure industrial corridor, Madhya Pradesh ensures seamless connectivity for businesses looking to establish or expand operations in India. Under the able leadership of Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh has consistently been ranked among the top states for ease of doing business in India. The state's single window clearance system, coupled with sector-specific policies, ensures streamlined approvals and a hassle-free investment process. The Madhya Pradesh Industrial Development Corporation, and we have a few officials from MPIDC as well here, actively supports investors with land acquisition, infrastructure, and other services, ensuring every investor feels welcome and empowered. There are diverse investment opportunities, of course, sectors like agriculture and food processing, renewable energy, automotive and engineering, pharmaceuticals and healthcare, tourism and hospitality. They all offer distinct advantages if you are present in Madhya Pradesh. People of Madhya Pradesh are its greatest asset. The state has a vast pool of educated and skilled youth backed by premier institutions in engineering, management, and medicine. These institutions are driving innovation and ensuring a steady supply of talent to industries. The government's focus on skill development through initiatives like the Global Skills Path is preparing the workforce for future challenges, making Madhya Pradesh an ideal destination for industries requiring skilled labor. Sustainability is important for Bavaria, for investors from Munich. Madhya Pradesh is committed to sustainable development, aligning with global goals for green growth. Its focus on renewable energy, waste management, and sustainable urbanization makes it a forward-looking partner for German businesses seeking environmentally conscious investments. The state is also embracing Industry 4.0 with IT parks and innovation. With IT parks and innovation hubs fostering entrepreneurship and technology-driven growth. Ladies and gentlemen, Madhya Pradesh is not just a destination, it is a partnership for growth. As we gather here in Munich, the innovation capital of Europe, I see immense synergy between Germany's expertise and Madhya Pradesh's opportunities. From renewable energy to automotive manufacturing, from pharmaceuticals to tourism, Madhya Pradesh is eager to create shared values and mutual successes. I invite you to visit Madhya Pradesh, witness its potential, and engage with its forward-thinking leadership. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh and his team are deeply committed to ensuring every investor feels at home in Madhya Pradesh and sees their investments flourish. Together, let us build a bridge between the heart of India and the heart of Europe. Let us embark on a journey of innovation, prosperity, and shared success. Thank you, and we look forward to working together and bringing you to Madhya Pradesh. Thank you. Thank you, sir, for setting the tone of the session today. We will now like to give you a glimpse showcasing the enchanting Madhya Pradesh through a video. When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I want to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. Gets tough and triumph upholds, I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail.
the times when the spirit is at peace. I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Power. Passion. And pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए ओनली इमेजिनेशन फिर बोलते समझ गए तो आर्ट नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट आप लोग घूम रहे भेड़ा खा Desire it all. मध्य प्रदेश सब कुछ जो दिल चाहे. That was surely an inspiring video. I now call upon Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, who will showcase a video highlighting the investment potential of Madhya Pradesh. Slight change in the plans. So we first invite Dr. Rajora. So Dr. Rajesh Rajora is the Additional Chief Secretary. Can we play the video, please? Die fünftgrößte Wirtschaft der Welt nach BIP ist eine schnell wachsende globale Macht, die von verschiedenen Industrien, einer jungen Arbeitskraft und Initiativen wie Make in India und Digital India angetrieben wird. Unter der visionären Führung von Premierminister Shri Narendra Modi wird das Land zu einem Zentrum für Handel, Investitionen und Innovationen und steigert seine globale Wettbewerbsfähigkeit. Im Herzen Indiens liegt Madhya Pradesh. Madhya Pradesh ist der fünftgrößte Bundesstaat Indiens mit etwa 89 Millionen Einwohnern und einem riesigen Verbrauchermarkt. Mit einer Fläche von 308.252 Quadratkilometern ist er der zweitgrößte Bundesstaat Indiens. Der Staat ist der größte Produzent von Kupfer, Mangan, Molybdän und Diamanten und besitzt die viertgrößten Kohlereserven Indiens. Unter der Leitung von Dr. Mohan Yadav hat Madhya Pradesh im vergangenen Jahr bemerkenswerte industrielle und wirtschaftliche Fortschritte erlebt, die durch die erfolgreichen regionalen Industriekonklaven und interaktiven Sitzungen im ganzen Land vorangetrieben wurden. Diese Initiativen unterstreichen den Fokus des Staates auf Infrastruktur, Arbeitsplatzschaffung und industrielles Wachstum. Das industrielle Rückgrat von Madhya Pradesh ist dynamisch und vielfältig. Madhya Pradesh bietet eine solide Grundlage für Investitionen in Schwerpunktbereiche wie Lebensmittelverarbeitung, erneuerbare Energien, Automobile und Bildung. Weitere bedeutende Industrien sind Pharmazie, Gesundheitswesen und Medizinprodukte, Petrochemie und Erdgas, Logistik und Lagerung, IT, ITS und ESDM sowie Tourismus. Der Staat beheimatet landesweit renommierte Bildungseinrichtungen, die Innovation, Forschung und die Ausbildung der Führungskräfte von morgen fördern. Das kulturelle Erbe des Staates ist eine lebendige Säule seiner Wirtschaft. Die Landwirtschaft liegt im Zentrum der Wirtschaft von Madhya Pradesh mit einer reichen Ernteproduktion und großem Potenzial für die Expansion in die Lebensmittelverarbeitung.
Die Landesregierung bietet eine zusätzliche Kapitalzuschuss von 50% und Steuerbefreiungen für 5 Jahre in dieser Branche. Dieser Sektor bietet enormes Wachstumspotenzial, das sowohl lokalen Bauern als auch Investoren zugutekommt. Das GSDP von Madhya Pradesh beträgt beeindruckende 13,80 Billionen für 2023-24. Madhya Pradesh ist ein Modell wirtschaftlicher Resilienz. Die zentrale Lage von Madhya Pradesh macht es zu einem wichtigen Handelszentrum. Durch nationale Industriekorridore ist der Staat mit allen 4 Himmelsrichtungen des Landes verbunden, was seine Position als wichtiges Zentrum für wirtschaftliche und industrielle Entwicklung festigt. Der Staat bietet ein günstiges wirtschaftliches Klima aufgrund seiner GIS-unterstützten großen Landbank, einer Wasserzufuhr von über 1000 Millionen Kubikmetern, ausgezeichneter Infrastrukturentwicklung und einer Energieversorgung von 31.000 Megawatt. Madhya Pradesh bietet als überschüssiger Stromstaat wichtige Voraussetzungen für die Expansion von Industrien. Um Unternehmen und Investoren zu fördern, bietet die Landesregierung transparente Richtlinien mit maßgeschneiderten Paketen ab 100 Millionen INR sowie eine Vielzahl von Vorschriften, Anreizen und Subventionen, die es zu einem attraktiven Standort für Innovation und Wachstum machen. Mit 43% der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist Madhya Pradesh der erste Staat, der ein Arbeitsrechtsmanagementsystem eingeführt hat. Internationale Investoren erkennen das Potenzial von Madhya Pradesh mit bedeutenden britischen und deutschen Unternehmen, die bereits im Staat tätig sind, und vielen weiteren, die in der Pipeline sind. Der Staat ist außerdem ein Spitzenreiter in der Geschäftserleichterung. Madhya Pradesh, im Herzen Indiens, ein Land politischer Stabilität, reich an Ressourcen und grenzenlosem menschlichen Potenzial. Angetrieben durch Wasser, Elektrizität und eine qualifizierte Arbeitskraft, lädt Madhya Pradesh Sie ein, Teil seiner vielversprechenden Zukunft zu werden. Thank you. Guten Tag, wir freuen uns sehr, in München zu sein. Thank you, Germany. Thank you, München, to host us. This is a place, this is a country which has produced great leaders all across the centuries, from Max Muller to Max Planck, from Beethoven to Hans Zimmer, and from Franz Beckenbauer to many new football players. So thank you very much, München. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Mr. Tobias Rosenthal, Dr. Rajesh Rajora, sir, Shri Sanjay Dubey, sir, Shri Saurabh Sangla from CII, Shri Shatrughan Sinha, sir, Deputy Consulate General in Munich. So I want to present the case why to invest in Madhya Pradesh. As you know that Honorable Prime Minister has recently made a statement in Stuttgart that year 2024 makes the 25th anniversary of Indo-German strategic partnership, making it a historic year. Germany's focus on India document reflects the world recognizing the strategic importance of India. You also know that German Chancellor recently visited India, and bilateral ties between India and Germany are all-time high. Our Chief Minister Sahab who happens to be Industry Minister also. He is heading this department from initial days when he became Chief Minister. He has declared, and his focus has always been industry, and he has declared year 2025 as year of industry and employment. So this is his vision to promote industry. We know that Indo-German economic and trade relations are very, very strong. There are more than 1,700 German companies operating in India, more than 200 Indian companies operating in Germany.
Indian FDI sectors for Germany in different fields, in IT, in pharma, in automobile, engineering, renewable energy, hospitality. And German FDI in India relates to logistic, electric equipment, metallurgical, automobile, and several others. Export from India to Germany is $10.13 billion, and exports from Germany to India $15.93 billion. So if you combine these, the bilateral merchandise trade between these two great countries is around $26 billion. Madhya Pradesh has also got a great connection with Germany, and Madhya Pradesh exports year-on-year basis. It has increased in past several years. It was $157.9 million in year 1920, and now it has risen to, in year 21-22, it has risen to 241.7. Exports from Madhya Pradesh is growing at a CAGR of 15.2%. So this is phenomenal. And what constitutes our exports to Germany? Agri residues, organic compounds, textile and garments, plastics, medicaments, and automotive parts. We have an economy in Madhya Pradesh which is based on several factors. But basically, Madhya Pradesh has got abundance from the nature, from the God nature. We are the second largest provincial area in India, more than 308,000 square kilometers of area. We have the largest forest cover. Geographically, we have around 32% our area covered by forest, which is around 12% of entire forest cover of India. We are the largest exporters and second largest producers of wheat in country. We are the cleanest state, and every time you hear about cleanliness and AQI and right to life and livability conditions, you will always see that ours have the cleanest capital and the cleanest city in shape of Bhopal and Indore. Indore has won 6 times the cleanest city award in India. We have 5th largest consumer base, which is around 88 million. Madhya Pradesh is a leading producer of diamond, copper, and manganese. We have abundance of mineral resources. We are largest cement manufacturers in India. We have thickest coal seam in our state. We have conducted highest number of mineral blocks auction, and in that respect, we are number 1 in entire country. So we have lots of opportunities here in mining sector. Now, Madhya Pradesh has got some definitive advantages. We have 43% working population, up 0.2 million graduates, which is added every year. Very low attrition rate. There is ease of living in our state. Skilled workforce is in abundance. We have good base of industrial water supply, more than 1,000 billion cubic meters at very affordable rates. We are power surplus state with more than 31 gigawatt of electricity supply, excellent road network, 5.1 lakh kilometers per road network. We have a very prominent national importance institutes in our state. We are focusing on higher education, technical education, medical education, and in skill development. Every field we are focusing very, very much. So we have 8 institutes, IITs, IIM, NITs. We have 55 private universities, second highest in entire country. Honorable Chief Minister, who previously was a higher education minister, he has taken lots of interest in developing higher education sector. He has recently initiated the process of declaring 55 colleges as PM Excellence colleges all across the state. We have 1287 industrial training institutes. We have 1373 government and private colleges. We have strong connectivity. We have strong connectivity catering to the value chain. You will see that almost all the major corridors pass through Madhya Pradesh, North, South, Agra, Mumbai, Delhi, Mumbai Industrial Corridor, East, West. So we have very good connectivity. We have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park. There are 6 airports.
आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर टोबियास, प्रबंध निदेशक बेयर लाकर, श्रीमान सौरभ जी, CII पश्चिमी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समिति, ACS राजा राजौरा जी, ACS संजय दुबे जी, PS राघवेंद्र सिंह जी, भारत के काउंसिल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा जी, उद्योग जगत के सभी साथियों, आप सबको नमस्कार। जर्मनी के बवेरिया प्रदेश की राजधानी म्यूनिख की धरती पर आयोजित इस सत्र में मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आप सबका इस सत्र में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और स्वागत करता हूं। भारत और जर्मनी के अतीत के काल से बहुत गहरे संबंध हैं। खास करके उद्योग और व्यवसाय जगत में भी हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। हमने इन संबंधों को निभाया भी है। यूरोप के सभी देशों से अगर तुलना की जाए तो जर्मनी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। मेरा जर्मनी दौरा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। आज मैं यहाँ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आया हूँ। हम जर्मनी के साथ एक नई तरह की साझेदारी चाहते हैं। साझेदारी जो केवल व्यापार तक सीमित न हो। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियां अपनी उन्नत तकनीकी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करें। मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक मानव संसाधनों एवं जर्मन की तकनीक का जिनमें संगम हो। मित्रों, मध्य प्रदेश आज एक संपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यह एक विशाल मार्केट है जो कि निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर भी है। जब मैं मध्य प्रदेश की क्षमताओं की बात करता हूं तो आंकड़े खुद बोलते हैं। मध्य प्रदेश आज भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में 3 गुना हुई है। हमारी विकास दर दोहरे अंक में है, लेकिन यह तो शुरुआत है। पिछले एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था 3 गुना हुई है। हम एक पावर सरप्लस स्टेट है। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी भी अलग से आरक्षित किया है। मध्य प्रदेश में आपकी फैक्ट्री को कभी बिजली और पानी की कमी नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास उद्योगों की और उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि की खासकर इसमें कोई कमी नहीं है। ग्रीन एनर्जी में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक हैं, जहां हम अपनी इकाइयों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके उत्पाद बना सकते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का भी पालन कर सकते हैं। मित्रों, जब मैं प्रक्रिया को आसान करने की बात करता हूं तो केवल वादे नहीं करते, बल्कि क्रांतिकारी बदलाव भी आ रहा है। सिर्फ 30 दिन में सभी विभागों की महत्वपूर्ण मंजूरियां, यह अपने आप में हमारी कार्यशैली का प्रकटीकरण है। और सबसे बड़ी बात, हमने 2000 से अधिक प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को या तो खत्म कर दिया या सरल बना दिया है। कई कानूनों के प्रावधानों को खत्म किया है जो बिजनेस में रुकावट बनते थे। इसका आशय साफ है, निवेशकों को कानूनी जटिलताओं से नहीं, अपने व्यवसाय में मदद करने से बात बनती है। यही कारण है कि हमें भारत सरकार ने बिजनेस स्थापना करने वाले राज्यों में पुरस्कार देकर कई बार अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारी विशेष टीम निवेशकों के लिए समर्पित है। हम कहते हैं मध्य प्रदेश में निवेशक मेहमान नहीं, परिवार का एक अंग है। इसलिए हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी मैं खुद करता हूं। आज निर्णय लें और कल से अपना प्लान चालू करें। मित्रों, आज एक ऐसी उपलब्धि हम साझा करना चाहते हैं जो विकास की यात्रा में एक मील का पत्थर है। हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नेशनल रोड शो के माध्यम से 25 बिलियन यूरो का निवेश हमने आकर्षित किया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह दर्शाता है कि भारतीय उद्योग जगत में मध्य प्रदेश की क्षमताओं पर किस प्रकार से विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। जर्मन की कंपनियां भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बने। मुझे खुशी है आज इस सत्र में कई ऐसे सफल उद्योगपति मौजूद हैं
जिन्होंने भारतीय मूल होने के नाते न केवल जर्मनी में अपनी पहचान बनाई बल्कि वैश्विक व्यापार में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। मित्रों, आज मैं एक निमंत्रण विशेष लेकर आया हूं। आगामी फरवरी माह में भोपाल में जो भारत की स्वच्छतम राजधानी एवं झीलों की एक विशेष नगरी है, जहां हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं। यह एक समिट नहीं होगी, यह आपको हमारी मध्य प्रदेश की प्राचीन मेहमान नवाजी से भी जोड़ेगी, जो आज तेज गति से बढ़ने वाले एक राज्य की अलग इतिहास की कहानी लिखने को तत्पर है। आइए मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको आमंत्रित करता हूं। मुझे मालूम है जिस धरती पर आकर मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये मैक्स मुलर की धरती है, जिसने हमारे वेदों के पवित्रतम ग्रंथों को दुनिया के सामने सरलता के साथ अनुवाद करके उसकी गहराई से समझाने का प्रयास किया है। मैं जर्मन में अपनी बात कह रहा हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि ये ऐसा अपने पुरुषार्थ और परमार्थ के साथ जीने वाली संस्कृति के लोग हैं, जिनकी दुनिया में किसी और देश से समीपता हो न हो, लेकिन निश्चित रूप से भारत के साथ समीपता है, जो आपकी इच्छा शक्ति के साथ आपके मन के अंदर के संकल्प को प्रतिबिंबित करती है, जिसने कड़ी से कड़ी चुनौतियां सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी सहन की है और दुनिया के सामने मजबूत अर्थव्यवस्था बन करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके अंदर की जीवटता का भी, और संसार में आगे बढ़ने के लिए भारत और जर्मनी को दोनों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। आइए एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें और हमारी साझा विरासत को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, sir, for your inspiring remarks. To conclude the session, I invite Mr. Saurabh Sangla, Chairman of CII, Western Region International Committee and Managing Director of Adroit Industries, to share his concluding remarks. तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी आप सीधे लाइव सुन पा रहे थे। जर्मनी के दौरे पर हैं सीएम, और 28 नवंबर से 29 नवंबर तक जर्मनी उनका दौरा है। और इस दौरे की सबसे खास बात कि इस यात्रा के दौरान प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों से वो 1-to-1 लगातार चर्चा कर रहे हैं। Germany's global reputation for innovation, precision engineering, and industrial leadership aligns seamlessly with the aspirations of Madhya Pradesh, a state at the forefront of India's industrial renaissance. Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Madhya Pradesh is undergoing a remarkable transformation. सर, पिछले एक साल में जिस तरह से देश और ने भी गति पकड़ी है, और खासकर हमारे मध्य प्रदेश ने गति पकड़ी है, वो अभूतपूर्व है। I was just mentioning that our state, in his leadership, in the last 1 year, has caught up with a tremendous economical boost, with a lot of investments coming in, not only from national companies as well as from international companies. And it is just because of his quick decisions and extremely sharp policies specific to the sectors which you've heard from everybody who's spoken today. Madhya Pradesh enjoys a unique locational advantage. Being centrally situated in the country, it serves as a transshipment hub, ensuring seamless connectivity to key industrial and consumable markets across the country. Just imagine the whole population of Europe and the population of India. We are 140 billion people, and if you sit in the heart of the country, you have that whole market in your grip at the lowest logistics cost. So there is no better location than Madhya Pradesh. There is no bigger market in the world than India. More than this, the state boasts a 90% road connectivity index, well-developed rail and airport networks, and proximity to 2 major Indian ports, which are within 800 kilometers from the various industrial hubs of Madhya Pradesh. This certainly makes it a preferred destination for industries requiring efficient logistics and supply chain operations.
there have been significant German investments in our state, namely Barlocker, and thank you so much for your investment. Other than Barlocker, companies like LAP, Hettich, and various others have invested and are continuing their growth and investment in our state. State boasts a number of wide industries. To name a few, automotive, textile, pharma, food. Also food, it reminds me that one of the major cities of Madhya Pradesh, which is the cleanest city, is the food capital of India. Food processing industries, software, IT, plastic processing, agro-commodities, capital goods manufacturing, infrastructure equipments, renewable energy, medical devices, and I can go on and on. Companies today in India, and especially in Madhya Pradesh, are led by highly educated and professional young blood. They are hungry for good technology. I'm sure the Germans are hungry for a bigger market. It could be a great combination of having a joint venture with the Indian companies and understanding the local mindset and accessing the local markets the way India can grow with your investments. Our group personally $100 million, and we continue to invest in the same state.